India has more of a multiple choice mindset. Would that be right? From non-alignment to, I think you may have called it, or somebody else called it, all alignment. So you can pick and choose alliances, but you can also pick and choose topics. On Russia, for example, you still buy Russian oil. Is that okay with your counterpart from the US? Everything is, your relationship is fine, you can do whatever you want, whenever you want? Okay. First of all... I mean, you're sitting next to each other. No. So. First of all, delighted to be here. And I couldn't find a better set of people to be with on the stage. So thank you for whoever put us all together. Your question, do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. Now, is that a problem for other people? I don't think so. I don't think so, certainly in this case and in that case, because look, we try to explain what are the different pulls and pressures which countries have. And it's very hard to have a unidimensional relationship. Now, again, different countries and different relationships have different histories. If I were to look, say, between the US and Germany, it is rooted, there's an alliance nature to it. There's a certain history on which that relationship is grounded. In our case, it's very different. So I don't want you to even inadvertently give the impression that we are purely and unsentimentally transactional. We are not. We get along with people, we believe in things, we share things, we agree on some things, but there are times when when you're located in different places, have different levels of development, different experiences. All of that gets into it. So life is complicated, life is differentiated. And I think it's very important today not to reduce the entire complexity of our world into very sweeping propositions. Yeah. I think that era is today behind us. Yeah. So I agree very much with what Tony said, which is good partners provide choices. Smart partners take some of those choices. But sometimes there will be choices on which you say, well, I think I'll pass up on that one. It's a very good point, which brings me to the BRICS and the rise of middle powers, because that is one of the shifts that we see today. To what extent do you think that is a challenge to the West, or maybe that can be sort of the bridge, especially in a world where we will see continued competition between the US and China? And I'm going to ask Minister JayaShankar first, but I'd love for both of you to come in as well. I thought maybe the BRICS one, you wanted the US. After you, Jay, please. Look, again, I think it's important to go back to how it began. The BRICS started in an era where Western dominance was very strong. The premier gathering of the world was the G7. And you had a number of significant powers in the world who felt that, well, they were not part of the G7, but maybe they also brought value to the table by sitting and discussing with others. So in a sense, you had a collection of these countries. It was originally 4. South Africa joined later. If you look at it, it's a very interesting group because it's geographically as disparate as it can be. Yet it is bound by the fact that these discussions we've had over a decade and a half have been very useful for all of us. Now, like any product, you test it in the market at some point. We tested it last year and asked people, so how many of you want to join BRICS? And we got almost 30 countries who were willing to join BRICS.
So clearly, if 30 countries saw value in it, there must be something good we've done. So I think it's important today to make a distinction between being non-West and anti-West. I would certainly characterize India as a country which is non-West, but which has an extremely strong relationship with Western countries, getting better by the day. Not everybody else necessarily in that grouping might qualify for that description, but the contribution the BRICS has made, if one looks at the G7 and how it evolved in. दोस्तों, भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में म्यूनिक में है, और कुछ उन्होंने बातें की हैं दैट आर रिगार्डिंग ग्लोबल साउथ, दैट आर रिगार्डिंग आवर रीजन, एंड दैट आर रिगार्डिंग ओवरऑल इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के हवाले से. और जो मज़े की बात ये थी कि वो अमेरिकन्स को लेक्चर करते रहे हैं, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेक्चर देते रहे हैं उनकी मौजूदगी में. मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि जो गुड पार्टनर्स होते हैं वो चॉइसेस देते हैं, और जो स्मार्ट पार्टनर्स होते हैं वो उनमें से कुछ चॉइसेस को अडॉप्ट कर लेते हैं. इट मीन्स कि अगर अमेरिका हमें चॉइसेस दे रहा है और हम अपनी मर्जी से कुछ उनमें से ले लेते हैं, तो दैट इज़ गुड. सो गुड पार्टनर्स प्रोवाइड चॉइसेस. अगर आप हमारे अच्छे पार्टनर हैं तो आप हमें चॉइस दे रहे हैं. सो हम पे एहसान ना करें. लेकिन एट द सेम टाइम एक क्वेश्चन आता है, वैसे आई डोंट नो यू कैन लिंक इट और नॉट. डॉक्टर जयशंकर जो हैं, ये थोड़ा फ़र्क है इसमें बात में. जहाँ भी जाते हैं, जिस मुल्क को उन्होंने जितनी मदद दी होती है, वो हर जगह उसका जिक्र कर रहे होते हैं, जस्ट टू कीप टेलिंग कि जी हमारा स्टेटस बढ़ रहा है. सो अमेरिका भी जारी बात है, जहाँ जाएगा वो ये बातें तो करेगा, हम आपको चॉइसेस दे रहे हैं, हम आपको एक अहम मौका दे रहे हैं. आप क्या कर रहे हैं? आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं अगर हम आपको मौका दे रहे हैं? और मज़े की बात यह है कि दोनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन की और जयशंकर की आपस में ऐसी केमिस्ट्री है दैट बोथ आर कॉलिंग ईच अदर एज टोनी एंड जे. जय ने ये कहा है, जयशंकर ने ये कहा, और वो टोनी कह रहे हैं. सो लुक एट द लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड लुक एट द लेवल ऑफ द कन्वर्सेशन बोथ द कंट्रीज आर हैविंग, जिसमें ये इसमें जर्मन पार्टनर भी उनकी बैठी हुई थी, जिसमें मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बड़ी बात लगी which I really want to share, and I think Pakistan is out of the game and how India is playing the game. Tony Blinken ने ये कहा कि if you are not at the table, you are on the menu. It means कि अगर आप टेबल पे बैठ के खाना नहीं खा रहे तो यकीनन आपका ही खाना खाया जा रहा होगा. ठीक है, so you have to survive here. So survival of the fittest है ये. So if you are on the table, if you are not on the table, you are on the menu. मतलब ये है कि अगर आपने अपने आप को सर्वाइव ना किया, ये मैसेज है पाकिस्तान के लिए भी कि हम तो इस वक्त मेन्यू बने हुए हैं एंड दे आर ऑन द टेबल. जो अगर सही बात देखी जाए इस खित्ते में, अगर हम हैं मेन्यू में हैं, हम किस चीज़ में, हमें तो दुनिया खा रही है इस सेंस में कि हम कहते हैं कि हमें यहाँ से भी टांग मार रहे हैं, वहाँ से बाजू मार रहे हैं, वो धक्का दे रहे हैं, वो हमें ये कर रहे हैं, हमारा दुश्मन की साजिश हो गई, फलां हो गई. सो इंडिया इज़ ऑन द टेबल विद द अमेरिकन्स, दे आर टॉकिंग ऑफ एवरीथिंग, एंड पाकिस्तान इज़ इन द मेन्यू. नॉट इन टर्म्स ऑफ इंडिया, अमेरिका ने पाकिस्तान को मेन्यू पे रखा, हमने खुद अपने आप को मेन्यू में रखा हुआ है. हम खुद अपनी जो चॉइसेस हैं उनको ख़त्म हमने कर दिया है. सो ये चीज़ें व्हाट आई हैव सीन इज़ कि वो जो, और फिर उसके बाद जो ये जो बात थी ना कि इफ़ द गुड पार्टनर्स जो चॉइसेस देते हैं और स्मार्ट पार्टनर्स जो हैं वो ले लेते हैं. और उन्होंने कहा है कि दिस इज़ व्हाट ही टोल्ड एंटनी ब्लिंकन, and that was very wise of डॉक्टर जयशंकर. उसने कहा कि मेरे पास अगर ज़्यादा चॉइसेस हैं तो इसका मतलब है मैं स्मार्ट हूँ, तो आपको मुझे तारीफ करनी चाहिए ना कि भाई देखो स्मार्ट प्लेयर है. एंड इंडिया कहता है जी मल्टीपोलैरिटी की बात करेंगे हम. वी डोंट वांट दैट दे शुड बी यूनिपोलैरिटी. वी डोंट वांट कि जी दो मुल्क
جو ہے وہ اپنی مرضی سے چیزیں کر رہے ہوں. We don't like this. So I think that's how Dr. JayaShankar is defining international politics, where he's projecting, what is foreign policy? When I was studying foreign policy, when I was teaching foreign policy, it's basically you have to maximize your national interest in the international anarchic environment. آپ کے ارد گرد انارکک انوائرمنٹ ہے, یو ہیو ٹو میکسیمائز یور انٹرسٹ. آپ نے اپنے انٹرسٹ کو میکسیمائز کرنا ہے, آپ نے اپنی آپشنس کو ایکسپلور کرنا ہے. یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کون سی آپشن زیادہ اچھا ہے, کون سی آپشن زیادہ اچھا نہیں ہے. جیسے بیک few decades back we had an option, either we should go to the Soviet Union or we should go to the American bloc, and we decided to be in the American bloc at that time. So it's all about options. So یہ ڈاکٹر جے شنکر نے بیسیکلی he was basically, in other words, he was educating or he was trying to give a lecture to Tony Blinken کہ بھائی میرے پاس آپشنز ہیں, میری آپشنز کی قدر کرو. I am with China, I'm working with China, I'm working with the Russians, I'm working with you, I'm working with other multilateral partners. ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. Do not take us as in a way کہ سو آپ ادھر دیکھیں گے باڈی لینگویج جہاں پہ اس کی ٹونی بلنکن کی, ٹھیک ہے جی, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بڑی امپورٹنٹ باڈی لینگویج تھی ان اے سینس کہ ہی واز ہیپی, ان اے سینس کہ یا آئی شوڈ ناٹ یوز دا ورڈ ہیپی, مطلب ہی واز لکنگ ڈاکٹر جے شنکر فرام اے لینس کہ بھائی یہ کیا بندہ بات کر رہا ہے. اور وہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا اسٹونشڈ بھی تھا کہ مطلب ہی از ٹاکنگ دس وے. سو لیکن وہ ہی واز لسننگ ہم ویری کیئرفل ان اے سینس کہ جرمن تو چلو ٹھیک ہے, اس طرح ان کی پوزیشن نہیں تھی جس طرح امریکنس کی ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل انہوں نے برکس کی بات کی, انہوں نے کہا جی جو برکس ہے اب ان another way, so the Indians are justifying their position in the BRICS, which is the only maybe or the second maybe the multilateral bloc against the Western institutional dominance, which is آپ کی جو ہے اب جو برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا, ساؤتھ افریقہ